Very good morning to all of you. Today we are going to study about a tropical cyclone which is coming in the Bay of Bengal, that is named Yas. Friends, few days ago in the western part of our country that we have witnessed a cyclone that is named Taukte, which was developed in the Arabian Sea, and that was also a tropical cyclone. Now the IMD forecast कि एक लो प्रेशर सिस्टम भी डेवलप हो रहा है इन दी नॉर्थ अंडमान सी एंड इट विल गोइंग टू हिट द ईस्टर्न कोस्ट, particularly the West Bengal and Odisha, these coastal states, by 26th of the May. So it was a part of the current affairs. So let us understand about various aspects. How to prepare this topic? That you prepare from two sections, keeping in mind, number one, the climatological aspect, that is from geographical perspective, and the disaster management, that is from the crisis management perspective, part of the general studies paper 3. So let us move and understand about the cyclone Yas. दोस्तों, that IMD forecast कि एक low pressure system develop हो रहा है in the North Andaman Sea and in the Bay of Bengal, clearly, and this system has the potential कि within the 72 hours ये severe cyclone की तरह develop होगा, and chances है कि the 26th of the May it can hit the West Bengal coast. So let us see. This is an example of the tropical cyclone, and the name proposed was Yas. And which country proposed it? It was the Oman. Taukte, that name कौन propose किया था? It was Myanmar. Now this cyclone is a tropical cyclone, and why? Because this cyclone developed in the tropical areas. We will see that what is tropical and what is temperate cyclone. Now, and this system even moves under the influence of the Coriolis. Last year also, the West Bengal witnessed a very super cyclone, that was Amphan. So Amphan last year visited, and Amphan, it was a super cyclone. Its death toll was quite high. Even more than 100 lives of the people lost their life. There was a huge devastation to the properties. So now the basic question started कि how to manage the upcoming the cyclone in a balanced and in a managed manner. That is a part of disaster management. So this is an example of a cyclone Amphan. That cyclone Amphan किस तरह से डेवलप हुआ? A low pressure system है, and this low pressure system के about the circulation started कि convergence होता है wind का, and then ये storm बढ़ते बढ़ते एक severe cyclone का form ले लेता है, and it causes the loss and damage to the life as well as property. We will see the life cycle of the cyclone in the today's class as well. So in order to understand the mechanism of the cyclone, you have to study a little bit about the climatological aspect, that is from geographical perspective. So दोस्तों, let's see and let us understand a little bit a geography about the cyclone phenomena. In the lecture, in the video lecture of cyclone Taukte, you can refer that. कुछ conditions हम लोगों ने discuss किया था, that what are the conditions responsible for the development of tropical cyclones. So you can also refer to that. It will enrich your the knowledge. Now India, this is the west coast, and here it is your Arabian Sea, and right side there is Bay of Bengal, and this is Andaman Nicobar area. Okay, there is Andaman Sea, and here it is Indian Ocean. So whenever we say cyclone, what is cyclone? It is a low pressure system, and this system is anti-clockwise in the northern hemisphere, and it is clockwise in the southern hemisphere. Two things you remember. What is northern hemisphere and the southern hemisphere? Let's say this is your globe, 0 degree line equator, which divides north को बोलते हैं हम लोग northern hemisphere, and south को बोलते हैं this is your southern hemisphere. So yes, tropical cyclone, if this is a cyclone system, then इसका direction क्या होगा? Anti-clockwise in the northern hemisphere and in the clockwise in the southern hemisphere. So what are the factors responsible for that? इस factors को याद रखने का तरीका क्या है? You can remember a trick. Okay, USAC. What is this USAC? That number one, the Coriolis force,
So Coriolis force क्या होता है? It is a pseudo force and which is due to the rotation of Earth. So rotation of Earth gives a Coriolis force. So Coriolis force, it is the one factor. Second, ascent of air. Third, ocean surface temperature more than 75 degrees Celsius. And upper air divergence. Upper air divergence. All factors are written here. You can remember these are the four important factors. And apart from this, एक सबसे important factor क्या होना चाहिए? Presence of a vortex. ठीक है? So this is the vortex. ये ITCZ area that is called equatorial low pressure area पे vortex present होना चाहिए, या the vortex should pass through the equatorial area. Okay, so equatorial area पे vortex present है, and ये सारे condition जब मिलता है, then it develops into a cyclone. ठीक है? Now cyclone कैसे होता है? That cyclone can be divided into two parts. That is your tropical cyclone and the temperate cyclone. The tropical cyclone which is developed in the tropical area, the latitude इसका होता है that is 5 degree to 35 degree latitude. The temperate cyclone in the temperate area, that is 35 degree to 60 degree latitude. That in the tropical areas this cyclone is developed, and कुछ unique features होते हैं. Let us understand what are the unique features. That first unique feature is that it is very destructive. Comparatively, temperate cyclone is less destructive. The tropical cyclone hits the east coast of the continent, and the temperate cyclone hits the west coast of the continent. The tropical cyclone driven or drives under the force of trade winds, and the temperate cyclone moves under the westerlies. ये winds के नाम है. Hopefully you in the geography classes you must have read about it, because since it is a current affairs lecture, we are basically confined with the time. You can refer to the geographical comprehensive lectures in our the channel as well. Now let us understand. It is the tropical cyclone. इसका जो wind speed होगा that is very high. Speed is very high. Okay. Here the wind speed is very relatively less. Diameter of the cyclone क्या होगा? Around, let's say the diameter of the cyclone, you can note that around the 300 kilometer, and diameter इसका बड़ा होता है, that is more than 1000 kilometers. Development of tropical cyclone only in the sea area. Okay, sea area. And temperate cyclone development both in the land plus sea area. Tropical cyclone comes in the month of summer, and temperate cyclone comes in the summer plus winter both. And winter it is more frequent. So remember, tropical cyclone only sea, summer season it is land and sea both temperate, and this is in the summer plus winter as well. And energy कहाँ से मिलता है सिस्टम को, ट्रॉपिकल साइक्लोन सिस्टम को? इट इज द लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. एंड टेम्परेट साइक्लोन हीट कहाँ से मिलेगा? ड्यू टू टेम्परेचर कंट्रास्ट. टेम्परेचर कंट्रास्ट ऑफ द टू डिफरेंट एयर मासेस. और हाउ इट इज फॉर्म? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रंटोजेनेसिस. By the process of frontogenesis. So from the time being, you remember that temperate cyclone hits the west coast, tropical cyclone hits east coast. Now one basic question कि tropical cyclone equatorial region पे क्यों नहीं develop होता है? Hopefully some people are confusing. So थोड़ा सा information, let's share it. Let's say this is your globe. This is 0 degree line. It is called equator. This is 23.5 degree north. It is called Tropic of Cancer, and this is 66.5 degree north line. This is called Arctic Circle. Southern Hemisphere पे this is 23.5 degree south. This is called Tropic of Capricorn, and एक line 6.5 degree पे होगा, that is called Antarctic Circle. Okay, so this area, that is Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn, this area is basically called tropical area. इन एरिया में क्या आएगा हमारा? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ठीक है. और 35 डिग्री के अबव क्या आएगा हमारा? टेम्परेट साइक्लोन. ओके. नाउ 0 डिग्री
to 5 degree, this is a very calm area, that is called doldrum. And doldrum पे Coriolis force is almost zero. Coriolis force is almost zero. What is Coriolis force? It is a pseudo force which provide the necessary torque. What is Coriolis force? जो इस cyclonic system क्या होता है? It is a moving system. It is a system. And this is a rotating system. And इस rotation को torque कौन provide करता है? The torque is provided by the Coriolis force. So Coriolis force is very important force. ये Coriolis force के चलते ही ये बड़ा होता जाता है and rotating system develop होता है. So in the 0 to 5 degree portion, Coriolis force is absent. That is why the cyclones are not developed in this 0 degree to 5 degree area. You remember it. It is an important fact. Clear? Now, if you have the latitude and longitude in mind of India, तुमको पता चलना चाहिए. If you talk about India, then it is the tropic of, this is Cancer, जो 23.5 degree line है. It almost passes through the middle part. So northern part of India, हमारा कौन सा region कहलाता है? This is your subtropical region. And this part, it is called tropical area. So hopefully people who are new now visualizing it कि tropical cyclones क्यों areas में hit करता है. ठीक है? So this is a low pressure system. And this low pressure system intensify होता है. क्यों? क्योंकि इसको ओशनिक सरफेस पे मॉइस्चर का सप्लाई मिलता है, हीट का सप्लाई मिलता है. और जब भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होता है, दिस इज ए वेल डेवलप्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन. साइक्लोन की स्टेजेस होते हैं, वी विल सी. दिस इज कॉल्ड आई. ओके, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज ऑफ द साइक्लोन डेवलपमेंट. दिस इज कॉल्ड आई. दिस इज ए कूल काल्म एरिया. हियर इट इज लो प्रेशर सेंटर. यहाँ पर एयर आर सबसाइडिंग होते हैं, सनसाइन मिलेगा. ओके, और इसके अराउंड जो ये दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड आई वॉल. आई वॉल इज द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द साइक्लोन. ठीक है, और इट इज द इनएक्टिव पार्ट, यू कैन कॉल इट. आई क्या होता है? इनएक्टिव पार्ट. दिस इज एक्टिव पार्ट एंड दीज आर कॉल्ड रेन बैंड्स. रेन बैंड्स बेसिकली जो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स डेवलप होता है. कौन कौन से क्लाउड? लाइक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ओके, क्यूमुलस क्लाउड्स, और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड एंड क्यूमुलस क्लाउड, these are the thunder as well as lightning के साथ rainfall होगा. and even it reaches to the tropopauge. ठीक है, and इस एरिया में जो आई एरिया होता है, यहाँ पर सीरस क्लाउड होते हैं. तो सीरस क्लाउड बेसिकली रेनलेस क्लाउड होते हैं, इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती है. सो 2-3 फैक्ट याद रखेंगे फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन. आई, इट इज ए कूल काल्म एरिया. हियर लो प्रेशर सिस्टम एंड हियर डिसेंडिंग, यू कैन कॉल इट द एयर्स. यहाँ पर सनसाइन होते हैं, ब्राइट सनसाइन. यहाँ पर सीरियस क्लाउड, यहाँ पर बारिश नहीं होती है. द मोस्ट एक्टिव पार्ट इज योर दिस आई वॉल सेक्शन. एंड इसके बाद रेन बैंड्स के थ्रू क्लाउड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एंड दे कॉज द रेनफॉल थ्रू लाइट एंड थंडर्स. ये सिस्टम दैट इज सी सरफेस से मूव करता है एंड व्हेन इट रीच टू द लैंड सरफेस देन व्हाट इट इज कॉल्ड लैंडफॉल, और यहाँ पर डिसिपेशन स्टार्ट होता है. एक बेसिक क्वेश्चन कि दिस सिस्टम को एनर्जी कहां से मिलता है? दिस इज फ्रॉम द, जब ये क्लाउड बनता है, ऐसे बढ़ रहा है, जब ऊपर जाके कंडेंसेशन होने के बाद क्लाउड फॉर्मेशन होता है. व्हाट इज क्लाउड फॉर्मेशन? पहले वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर से गैसियस फॉर्मेट में मॉलिक्यूलर होता है. सो इट इज व्हाट द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के चलते ये जा रहा है. फिर जब मॉइस्चर, जब कंडेंसेशन होता है, तब ये क्लाउड फॉर्मेट पे कन्वर्ट हो रहा है, गैस टू अगेन लिक्विड ड्रॉपलेट्स. सो इस प्रोसेस में लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के चलते हीट रिलीज होता है, और ये हीट इज द सोर्स ऑफ दिस साइक्लोन. सो जब तक ये सी के ऊपर में है तब तक उसको हीट मिलता रहेगा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. जैसे ही वो सी सरफेस के बाहर आएगा तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन का सप्लाई बंद होगा एंड इन दिस वे उसका डिसिपेशन स्टार्ट होता है. ठीक है, सो ऑल यू नो अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन, दीज फैक्ट्स. दोस्तों, this is the time when we are also witnessing the monsoon. That is monsoon. Monsoon is what? Seasonal reversal of the winds. So monsoon जो समर सीजन पे आता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साउथ वेस्ट मानसून. एंड जो
विंटर सीजन पे दैट इज व्हेन दैट देयर इज ए रिमूवल ऑफ मानसून, दैट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट एंड इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून. ठीक है. सो साइक्लोन्स बेसिकली दो सीजन पे आएगा. इफ इट इज द समर सीजन देन ये स्टीयर किससे होता है? ड्यू टू ट्रॉपिकल डिप्रेशंस. एंड विंटर सीजन पे जब साइक्लोन्स आता है देन इट इज स्टीयर्ड बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. सो यू कैन रीड इन योर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, इट विल क्लैरिफाई बेटर. समर सीजन में द ट्रॉपिकल डिप्रेशंस एंड द विंटर सीजन इट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. So southwest monsoon, that is June to September season, it is the summer season in the northern hemisphere. Okay. Now you have to understand this mechanism that let's say this is the equator line, that is your 0 degree line, that is equator line. This is southern hemisphere and this is northern hemisphere. Okay. 8 degree से हमारा Indian latitude शुरू होता है. So this is the northern hemisphere. The southern hemisphere, what happens? The summer season, sun shifts northward. हमारा सन शिफ्ट नॉर्थवर्ड और समर शिफ्ट नॉर्थवर्ड के चलते ITCZ, that is low pressure belt, also shift northward, and these areas are the low pressure system. Relatively, जो southern hemisphere है, these are the high pressure system. Okay, क्योंकि वाटर रिलेटिवली धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे शांत होता है. सो हाई प्रेशर सिस्टम से लो प्रेशर सिस्टम की ओर विंड ड्रिवन होगा. तो जैसे ही यहाँ पर ट्रेड विंड चलता है, दीज आर कॉल्ड विच डायरेक्शन? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड साउदर्न हेमिस्फीयर से ब्लो करता है. और जैसे ही वो इक्वेटर लाइन को क्रॉस करेगा, इस पे कोरियोलिस फोर्स लगता है एंड दीज ट्रेड विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट विंड्स. Okay, not clarified. Let us understand what is the Coriolis force. Coriolis force, it is a pseudo force जो कि wind को, if it is the northern hemisphere और let's say ये southern hemisphere, so northern hemisphere पे wind को right direction में deflect करेगा and southern hemisphere में wind को left direction में deflect करेगा. Let us understand. Southern hemisphere पे let's say this is your wind, so इसको इसके right में deflect करा देगा. So this is the direction. If it is wind is in साउदर्न हेमिस्फीयर नीचे है, तो इसको किधर डिफ्लेक्ट करेगा? लेफ्ट डायरेक्शन, मतलब इसके लेफ्ट में वो इसको शिफ्ट करा देगा. ठीक है. सो इफ इट इज साउदर्न हेमिस्फीयर पे यदि विंड ऐसा है, इसको डिफ्लेक्ट किधर कराएगा? इसके लेफ्ट. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे विंड है इस डायरेक्शन पे, इसको किधर करेगा? इसके राइट. तो इस तरह से. सो कम बैक, दिस विंड तो जब इक्वेटर लाइन को क्रॉस करेगा, तो इक्वेटर लाइन को क्रॉस करने के बाद इस पे कोरियोलिस फोर्स इसको राइट डायरेक्शन में मूव कराएगा एंड दिस इज द साउथ वेस्ट विंड एंड दिस इज द साउथ वेस्ट मानसून. यू कैन रीड द चैप्टर मानसून इन योर NCERT टेक्स्ट बुक. नाउ कम बैक, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दैट ओशनिक सरफेस वार्म होगा, जिसके चलते यहाँ पर आई डेवलपमेंट होगा. इस तरह से वो इंटेंसिफाई होते हुए बड़ा होते चला जाएगा. ओके, एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द साइक्लोन. इसको लो प्रेशर सिस्टम से ये क्लाउड फॉर्मेशन वाला स्टेज है. ठीक है. जब तक इसको हीट मिलते रहेगा तो ये इंटेंसिफाई होते चला जाएगा, क्योंकि व्हाट इज द सोर्स? लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. तो जैसे ही वो लैंड पे चला जाएगा, वो कट ऑफ हो जाएगा एंड डिसिपेशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. नाउ वेदर मैकेनिज्म इन द समर सीजन इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. व्हाट आर द फॉलोइंग फैक्टर्स? यू कैन रीड दीज फैक्ट्स कि किस तरह से चीजें डेवलप होती है, एंड इट इज बेसिकली अबाउट द मानसून. ठीक है. इट विल हेल्प. सो फ्रेंड्स, you should keep these facts in your mind with respect to the tropical cyclones. ये tropical cyclones की geographical aspect है. And now let us understand that how the state should prepare for the management. Second part, that is the crisis management. According to IMD, that ये 26 के around that it will hit the coastal areas of the coastal states. Okay. So these are the Odisha, West Bengal. Okay, these are the states which are hit by the cyclone. So now, crisis management, how cyclone to be managed? So here is state government actually taking the initiative. State government, the district collectors को order दिया गया है कि prepare well. So what are the things they should be done? They are actually trying to making the arrangement of more and more cyclone shelters.
Cyclone shelters क्या होते हैं? The public buildings. So cyclone shelters. So that is called in the densely populated coastal areas where the large scale evacuations are not always feasible, public buildings can be used as a cyclone shelter. Cyclone shelters उसको यूज कर सकते हैं जो बेसिकली लार्ज स्केल इवेक्यूएटेड एरिया में पॉसिबल नहीं है. वी कैन ऑल्सो द ट्रिगर द सिविल डिफेंस फोर्सेस. ओके, सिविल डिफेंस को हम लोग कर सकते हैं. नाउ वी कैन ऑल्सो that integrate into network of the NGOs. Okay, NGOs, because in the time of the pandemic what we have seen that it is not only the state agency plus private partners, rather it is the civil society. ये भी बहुत effective role play करता है in the crisis management, that even that various stakeholders of the society, so you can integrate into this management. because जो सबसे nearest कौन होता है, that is called, we can NGO को ऐड कर सकते हैं. even the local governments would be involved proactively in this management. so क्या ऑर्डर दिया गया है कि सिविल डिफेंस फोर्सेस would be there. उड़ीसा गवर्नमेंट kept vigil on the development of response of the NDRF and also the disaster, the rapid action forces, that पुलिस फोर्सेस के साथ बातें चल रही हैं. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन was told to prepare for cyclone along with the COVID-19. so one of the major problem कि states are also facing what, that is your the problem of the COVID-19. secondly अभी बहुत सारे states में black fungus के cases भी हो रहे साथ साथ. so there is a huge pressure on the system as well. so it is a very responsibility of the people as a part of the society that they should also participate in the management. State governments should prepare well and even the people should take care. Okay, so take care about yourself as well as the family in the hours of the crisis management. So hopefully this video will help you to understand the various aspects with respect to the cyclone and how the people should stood in the crisis hours and how to take the challenge in a better way. So thank you for watching the video. Have a good day.